Good evening, all of you. I'm Santosh Takale. Just let me know in chat box again whether I'm audible clearly so that I can proceed. Okay. Thank you. See, today's session, which is demo session for EC group GATE exam, will be taken by Shankar sir. Okay. I'll be giving only brief introduction. We had just 4 or 5 days back similar demo session on a GATE exam for mechanical engineering group. So there I had spoken same thing, and that video I had shared to your group also, which is formed for this particular GATE exam preparation. So my content is same. What I'll be elaborating is that those who want to pursue career in technical field of engineering, like your fields are electronics, XTC, and related fields, need to know the fundamentals of engineering thoroughly, and those are checked very nicely when you appear for GATE and your score comes. Normally, most of the renowned uh, organizations are opting for the GATE score as a evaluation or qualifying criteria. So, like suppose you go for the selection of ISRO or DRDO or BARC. Normally, these scores has got lot of weightage. It also helps you in pursuing your post graduation, that is masters, mtech, me, and other things. Also it gives you lot of weightage when you go for the industrial exposure. So with that intention, I always felt that it's will be good opportunity to guide you all. And I'm from mechanical field, so some supporting teachers who are associated with us in this online teaching activity since last 1 year come up with the solution that why not to go ahead with this activity, जहाँ पे लोग बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं। हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, एक 100 घंटे का, तकरीबन 80 से 100 घंटे का, जिसमें हम लोग 70 से 75 80% सिलेबस एक क्रैश की तरह कवर करेंगे। बच्चे इस तरीके के गाइडेंस के लिए इच्छुक हैं, उनको एक नहीं बोला तो भी मतलब बेटर देन नथिंग टाइप का गाइडेंस मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने जो फॉर्म भरा, गूगल फॉर्म, उसमें दे हैव आस्क्ड फॉर द क्वेरीज लाइक हाउ यू आर गोइंग टू कवर complete syllabus of GATE in 100 hours. Very genuine and very nice question, and we agree that it is impossible to cover. But ये कोई कोचिंग क्लास नहीं है गेट जैसी एग्जाम का, और ना ही कोई भी कोचिंग क्लास गेट जैसी एग्जाम का जब क्रैश देता है या डिटेल कोर्स देता है, इट्स अराउंड 100 150 200 250 आवर्स। अभी आप खुद जानते हो कि आप 4 साल जब इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो कितने घंटे का पढ़ाई थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली होता है। तो इतने घंटों की पढ़ाई को 100 घंटों में कवर नहीं किया जा सकता, ये हम भी जानते हैं। एंड देन रही बात कि पूरा सिलेबस कवर होगा क्या, तो 101% पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, थरली नहीं होगा, इन डेप्थ कुछ नहीं होगा। बट जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, उनको एक तरीके से एक गाइडलाइन मिल जाएगा कि किस तरीके से उनको उनके जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं या हो चुके हैं उनको प्रिपेयर करना है, सो दैट दे कैन स्कोर बेटर इन अ गेट एग्जामिनेशन। इट आल्सो हेल्प्स इन अ टेक्निकल इंटरव्यूज फॉर द मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सर टेस्ट सीरीज जैसा कुछ कंडक्ट होगा क्या, थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए भी स्पेशलाइज्ड आवर्स लगेंगे जो हमने इसमें उस तरीके से नहीं दिए हैं। बट देन शंकर himself कम अप विद आइडिया कि सर इसमें हम कुछ थोड़ा बहुत तो एग्जाम उनका लेंगे, जिसमें उनका असेसमेंट होगा, देन दे विल कम टू नो कि एग्जैक्टली किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। बट देन इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट एंड कंपल्सरी ऑन अस। इसलिए ये पहला लेक्चर होने के बाद भी आप जब 500 रुपीज देंगे, विच इज रियली स्पीकिंग पीनट्स, इतने कम पैसे कोई नहीं लेता है, बट ये देने के बाद भी आपको प्रॉमिस है कि अगर आप सिंसियरली क्लास करोगे और फिर आपको पसंद नहीं आया तो वी विल रिफंड योर 50% फीस। बट यहाँ सिंसियरिटी और रेगुलर अटेंडेंस बहुत जरूरी है। और ये फर्स्ट डेमो के बाद आपका इमीडिएटली जो फर्स्ट लेक्चर होगा वहां से शुरू हो जाना चाहिए। रही बात कि 2022 का फरवरी का जो गेट एग्जाम होगा, क्या उसके लिए आप हमको प्रिपेयर कराएंगे, तो 100 आवर्स का जो आपके लिए कमिटमेंट है वो ऑब्वियसली दिसंबर जनवरी तक ही खत्म करेंगे। बट उससे आपका 2022 की गेट में स्कोर आएगा कि नहीं,
ये कोई आपको लिख के नहीं दे सकता, ये तो आपके प्रिपरेशन पे। फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स का अलॉटमेंट, उनका सिलेबस, उनके मार्क्स, फिर उसमें मैथमेटिक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, एप्टीट्यूड का कितना है, ये सारी चीजें आपको इस क्लास में सर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप उससे गो थ्रू करके फिर डाउट्स आते हैं तो आप मुझे, जो माय नेम इज संतोष टकले, मेरा नंबर है ग्रुप पे, शंकर सर का भी नंबर मैं इमीडिएटली डालूंगा, क्योंकि आपका पेमेंट जो होना है वो शंकर सर को ही होगा, और आपकी सारी अथॉरिटीज, जिम्मेदारी, ये सारी चीजें उनके ही डोमेन में रहेंगी। आई विल बी जस्ट टेकिंग केयर ऑफ और एज फैसिलिटेटर, ओके। कि मेरा काफी रैपो है, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ माई लास्ट 25 years प्रोफेशनल सर्विस इन अ वेरी रिनोन्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ये इनिशिएटिव मैंने लिया, बट इसकी जिम्मेदारी शंकर सर लेंगे, एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ हम हिम, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे टीचर है। सो एनीवे, आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम, ऑलरेडी मैंने आपके 6 मिनट लिए। अभी मैं शंकर सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज कंटिन्यू करें। आई विल बी प्रेजेंट इन क्लास, so as everybody follows the discipline and behavioral good part. Okay, so Shankar sir, please continue. Thank you so much. Yes, sir. Thank you. Everyone, please confirm that I'm audible. Am I audible? Okay, fine. So I would just like to request you all, please put your attendance in the chat box. Please write your name in the chat box. Okay. Everyone, please put your attendance in the chat box. Okay, fine. So, good evening again. How are you all? Okay, fine. Just finish your attendance. Okay, I think it's done. Now I'm presenting my screen. Please let me know whether it is visible for you or not. Visible? My presentation is visible? Okay, fine. Good. So welcome again to the demo class for GATE examination, Electronics and Communication branch. Okay. So first of all, we will discuss about GATE examination. What is GATE examination? So you all must be aware of the thing that GATE, the word itself stands for Graduate Aptitude Test in Engineering, right? So basically this exam tests your aptitude in engineering field, right? So GATE examination is conducted. Please keep your mic off. Okay, whoever is starting the mic, please keep your mic off. Okay, fine. So GATE examination is conducted once in a year in the February month. You all know that, right? Mostly in the first or second week, right? And GATE examination is conducted by one of the IITs, right? Last year it was IIT Bombay, and this year in 2022, IIT Kharagpur is going to conduct the GATE examination. Okay, so IIT Kharagpur is conducting the GATE examination. That does not means the paper is set by IIT Kharagpur only. Okay, it is combination of all the IITs. Like every IIT contributes to set the GATE examination paper. Okay, so if I talk about statistics for our for particularly our branch in last year in 2021, near around 80,629 students appeared for the examination. Okay, and out of these 80,629 students, only 13.84% students were able to clear the cutoff. Just cutoff, I'm talking about just the cutoff. Okay, 13.84% students were able to clear the cutoff, so that you can guess the um,
what we can say, आप अंदाजा लगा सकते हो कि गेट एग्जामिनेशन की लेवल क्या है. ओके, एंड eventually or luckily I am one of those 13% students. Okay, so I have cleared the gate examination in 2021. Not only this, this wasn't my only appearance in the gate examination in 2021. I have also given the gate examination in before that also, and I have failed in that examination. So basically, I have the experience of failure as well as success in this examination. All right. So I think I feel I am the right person to guide you people how to crack the gate examination. Don't you think so? Okay, fine. So let me just show you the statistics that I was telling you. So I have changed the presentation. That is, here you can see this is pass percentage, and this is total number of candidates appeared in the GATE examination, GATE 2021. Okay, so this is for all the branches. So if you go through this list, so maximum pass percentage is for geophysics branch, and that is 29%. Right. So, and if you observe all other branches, it is 20, 17, 19. So this is passing percentages passing percentage in gate examination. Okay, so passing rate is very low. Okay, fine. So what is the syllabus for gate examination? Now I will run you through the syllabus. I think syllabus tab is visible. Is it? Syllabus is visible. Okay, fine. So there are in total 10 subjects in the gate examination, okay, including mathematics and aptitude, including mathematics and aptitude. So mathematics and aptitude, only these two subjects can give you 30 marks. Okay, they have allotted 30 marks for, like, 15 marks for mathematics and 15 marks for aptitude and reasoning. Okay, so in engineering mathematics, you have to study linear algebra, calculus, differential equations, vector analysis, complex analysis, and probability and statistics. So I think आप अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हो तो आपने ऑलरेडी ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में सीख लिए हैं. You just have to study for the higher level, right? थोड़ा सा हायर लेवल का आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है गेट एग्जामिनेशन के लिए. Now in the second section we have two subjects, that is networks and signal and system. These two are different subjects or separate subjects. Okay, in networks, what we have to learn, we have to deal with the circuits which contains resistors, inductors, and capacitors. So the circuits will be like permutation and combination of these three elements only. Okay, in networks you have to deal with such kind of a circuits. In signal and systems, you have to perform operations on signals, like different signals, analog signals, digital signals, sinusoidal signals, right? So you have to perform like Fourier transform, Z transform, these kind of operations on signals, and here you will get the basic idea of systems in this subject. Okay, next subject is electronic devices. In this subject you have to learn PN junction, Zener diode, BJT, MOS capacitor, MOSFET, LED, photo diode and solar cell in detail manner. Okay, अगर आप लाइक थर्ड ईयर में हो तो आपने ये सारे डिवाइसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हो. आप यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दिस डिवाइसेस, बट फॉर गेट एग्जामिनेशन यू हैव टू स्टडी दिस डिवाइसेस इन अ डिटेल मैनर. लाइक आपको एटॉमिक लेवल की स्टडी करना पड़ता है, मतलब आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना पड़ता है कि लाइक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रेवल्ड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. सो मतलब इतना डीप आपको स्टडी उसमें करना पड़ता है. ओके, सो जो हमारा यूनिवर्सिटी लेवल का सिलेबस रहता है, दैट इज आई कैन से थोड़ा सा मिडिल लेवल का रहता है, और ये जो सिलेबस है थोड़ा सा हायर लेवल का स्टडी आपको करना पड़ता है. सो यू हैव टू यूज रेफरेंस बुक फॉर better understanding. And in analog circuits we will be using the devices that we have already learned. मतलब कि pn junction, bjt, mosfet, ये सारे devices हमें analog circuits में actual में किस तरीके से circuits में उनका use होता है, we have to learn that. Okay, bjt amplifiers, mosfet amplifiers, again we have
OPAM circuits. OPAM stands for operational amplifiers. So OPAM circuits में summers, differentiators, integrators, active filters, and schemic triggers, and oscillators. So these circuits we have to learn. So सो इफ आई टॉक अबाउट यूर यूनिवर्सिटी सिलेबस, आपको सिर्फ मतलब उसका डेफिनेशन लिखना होता है. लाइक इफ डिफरेंशिएटर अगर आपको पूछा जाता है यूनिवर्सिटी सिलेबस में, सो आपको सिर्फ डिफरेंशिएटर का डायग्राम ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू स्पेसिफाई दैट दिस पर्टिकुलर सर्किट differentiates the input signal and gives the output as a differentiated version of the input signal, right? But इन गेट एग्जामिनेशन आपको एक्चुअल में न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे. लाइक एट द इनपुट यू हैव अप्लाइड द triangular wave or square wave, and what will be the output of the circuit. Okay, and the input need not to be square wave or triangular wave. It can be anything. So you have to study like this. In digital circuits is one of the easiest subject and my favorite subject. So digital circuits mein you have to deal with number systems, binary number system, octal number system, hexadecimal, decimal number systems. After that, combinational and sequential circuits. So combinational circuits में arithmetic circuits like adders and subtractors you might have already learned. Code converters, multiplexers, demultiplexers, decoders. And in sequential circuits, you have to learn latches, flip-flops, counters, shift registers, finite states machines, propagation delay, setup and hold time, critical path delay. Okay, so I think till digital circuits, you have clear idea what you have to learn. Shall we proceed? Am I going too fast? Please respond in the chat box. Okay, fine. Thank you. So then we have data converters, analog to digital data converters, digital to analog data converters, that is DAC and ADC. Then we have semiconductor memories, ROM, SRAM, and DRAM. So how these memories function, or what is inside these memories, that we get to know here. So one more thing I would like to highlight here is the computer organization part. So this is newly added newly added portion in the digital circuits. Okay, this portion has been added for the gate examination like 2021 only, and it will be continuing in 2022 also. Before 2021 examination, instead of this computer organization, we had 8085 microprocessor. So that portion has been eliminated by IIT Bombay last year, and this portion has been added. Okay, so you have to note that. Next, we have control system. So we have seen the basics of systems in signal and system subject. So in control system, we are going to focus on stability of the system, how this system can be or how much the system is stable. So we have to going to analyze it. So transient analysis and steady state analysis, these two types of analysis we are going to do. And we are going to find out the stability of the system by using Routh-Hurwitz criteria, Nyquist stability criteria, Bode and root locus plots. So these are the methods that we are going to use to find out the stability of the system. So let me tell you one thing. Out of these 3-4 methods, like RH criteria method, Nyquist stability criteria method, Bode and root locus, out of these 4, one question is at least there in the gate examination. मतलब एक question तो at least रहता ही है. Okay, so if you prepare these 4 methods properly, so there your 2 marks are 100% secured. Okay, after that we have lag, lead, and lag lead compensation. So if the system is unstable, we compensate the system and we try to stabilize it. So that is compensation circuits. So we are going to learn that as well. And the last one is state variable model. So once we learn the stability of the system, then you will understand what is state variable model. So I will not talk about more about state variable model. So the next subject we have is communications. So if you observe this syllabus, actually you have 3 subjects embedded in this one subject.
First subject is analog communication, second one is information theory, and third one is digital communications. आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ये तीन सब्जेक्ट्स अलग अलग सेमेस्टर में सेपरेटली सिखाए जाते हैं, right? So you have to learn all these subjects. So if you are not like planning for 60 or 80 marks, you can skip this particular subject, but I won't recommend that, okay? Quite, because this is like this is very vast syllabus, बहुत बड़ा syllabus है ये, it consumes a lot of time. Next सब्जेक्ट वी हैव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हमें मैक्सवेल इक्वेशंस पे ज्यादा फोकस करना है. उस पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है 2 मार्क्स का. मैक्सवेल इक्वेशंस, प्लेन वेव्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, transmission lines, and rectangular and circular waveguides. So this is the syllabus for, this is the technical syllabus for GATE examination. Okay, so aptitude का जो syllabus है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. And there is English grammar also, if you know, right? इंग्लिश ग्रामर का भी सिलेबस होता है. इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस के लिए आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर गुड इनफ इन इंग्लिश, देन यू कैन इजीली स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन द इंग्लिश ग्रामर. सो जो 15 मार्क्स मैंने कहा था ना कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए रहता है, तो उसी में 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक आपको इंग्लिश भी पूछा जाता है. ओके, सो इफ यू आर गुड इनफ, you can get the marks. You don't need to study separately English for GATE examination. You just have to study aptitude. So aptitude का भी जो syllabus before 2021 examination वो define नहीं किया गया था, लेकिन 2021 में ये subject define किया गया है. So we will complete the we will go through the complete syllabus of aptitude and reasoning. Don't worry about that. Okay. Now coming back to our main presentation, what is exam pattern? All right. So exam pattern in GATE examination, you have 65 questions for 100 marks, right? Out of those 65 questions, you have 30 questions of 1 marks, and 2 marks questions are 35. So 30 into 1, that is 30 marks, and 35 into 2, that is 70 marks. 30 plus 70, 100 marks. सो दिस इज फिक्स पैटर्न. मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो 30 ही आएंगे, 31 नहीं आएंगे, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 35 ही आएंगे. दैट इज फिक्स्ड. सो क्वेश्चंस के टाइप क्या होते हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन: MCQ, MSQ, and NAT. MCQ for multiple choice questions, MSQ for multiple select questions, and NAT for numerical answer type. So in MSQ, you have 4 options, out of which only 1 is correct, and all other 3 options are wrong. So you have to select that correct option only in order to get the marks. In MSQ, you can have more than 1 answers correct. ओके, मतलब अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, सो इट इज पॉसिबल कि वो 4 के 4 ऑप्शन सही हो, राइट? इफ यू सिलेक्ट 3 आउट ऑफ देम, अगर 4 ऑप्शन सही है, आप 3 सेलेक्ट करते हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स, राइट? मतलब अगर 3 सही है तो आपको 3 ही सिलेक्ट करना है, अगर 2 सही है तो आपको 2 ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस. ओके, इट माइट बी पॉसिबल लाइक एक ऑप्शन भी सही हो, 4 भी सही हो, सो इट इज नॉट फिक्स्ड. ओके, the last type of question is numerical answer type. So इसमें आपको calculations करना है. You have to perform calculations. You have to find out a numerical answer, and you have to type that answer manually on that portal, GATE examination portal. Okay, so for MSQ and NAT, you don't have negative marking. आपको इसमें negative marking नहीं मिलता है. Okay, negative marking नहीं है. Negative marking is only there for MCQ type of questions. So MCQ type में आपको 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है. मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन सही सेलेक्ट करते हो और एक क्वेश्चन अगर आप सॉरी या अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, सॉरी एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो और अगर 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, तो आपको जो आपने जो एक क्वेश्चन सही किया है वो भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. मतलब उसके भी मार्क्स आपके चले जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग्स. All right. So one more thing that I have came to know from my experience of this GATE examination, कि GATE examination में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है. लाइक इफ यू पिक अप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ लास्ट 25 years, यू विल फाइंड आउट, मतलब आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा रिपीट हुआ है ऐसा दिखेगा नहीं. ओके, एवरी ईयर देयर आर न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, बट दैट डज नॉट. ओके, कैन यू प्लीज रिपीट अबाउट MCQ? श्योर. सो MCQ में क्या होता है, sorry, MSQ is multiple select questions.
लाइक आपको चार ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड आउट ऑफ दोज फोर ऑप्शंस एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। लाइक एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, दो ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, तीन भी करेक्ट हो सकते हैं, या फिर चारों के चार ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, राइट? सो यू हैव टू select correct number of answers, multiple answers, you have to select multiple correct number of answers, all right? So yeah, किस चीज के बारे में बात कर रहे थे हम? हाँ, तो क्वेश्चंस रिपीटेशन के बारे में। तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है गेट एग्जामिनेशन में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो ऑब्वियसली रिपीट होंगे ही। सो जब कभी भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वी डोंट हैव टू मग अप द क्वेश्चंस। लाइक एक एक क्वेश्चन मुझे जम ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि कहीं से उसका आंसर फाइंड आउट करूंगा एंड आई विल मग अप द क्वेश्चन, सो दैट वोंट हेल्प यू। ओके, that is not going to appear in your examination. You have to search for the concept behind that question, that may help you. So जब कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो, make sure you are solving the questions जो कि आपसे एक्चुअल में सॉल्व नहीं हो रहे हैं। like if you are solving all the questions, that means you are solving wrong type of questions। मतलब अगर आपके सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं, so you are solving easy level के questions। तो कहा जाता है ना कि like if you are smartest in the class, then you are in the wrong class। so उसी तरीके से अगर आप सारे क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हो तो आप गलत टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। so when you are practicing for gate examination, you have to make sure you solve at least 5 to 10 questions daily जो कि आपसे नहीं जम रहे हैं, आप मतलब उसमें अटक ही जा रहे हो। सो इससे क्या होगा कि आपको नए नए कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने को मिलेंगे। एंड दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपके बेसिक्स जितने अच्छे रहेंगे, जितने क्लियर रहेंगे, उतना ही आपको इजी पड़ेगा गेट एग्जामिनेशन में। ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स rather than number of questions solved। या सो ये मैं कहना चाहूंगा। नाउ इन टुडेज डेमो क्लास, अभी ऑलरेडी 27 मिनट्स तो जा चुके हैं। सो जो कुछ समय हमारे पास बचा है उसमें हम नेटवर्क्स का जो सब्जेक्ट है, नेटवर्क सब्जेक्ट है, इसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, सो नेटवर्क्स को कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट से भी मतलब सब्जेक्ट होता है हमें, और नेटवर्क थ्योरी के नाम से भी सब्जेक्ट होता है। सो दीज थ्री आर सेम, नेटवर्क्स, नेटवर्क एनालिसिस एंड नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ, लेकिन थ्योरी आपको पूछा नहीं जाएगा। जो सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आपके 98 to 99% क्वेश्चंस विल बी न्यूमेरिकल आंसर टाइप। लेकिन जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, आज पहला लेक्चर है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ। सो व्हाट इज नेटवर्क? व्हेन वी कनेक्ट two or more elements together, then it is said to be network। उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। now what is circuit? when the current is flowing through that network, when the current is flowing through the network, then that network is said to be circuit। नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेटवर्क एनालिसिस नाम का एक सब्जेक्ट होता है। सो व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस इज एनालाइजिंग ऑलरेडी गिवन सर्किट। मतलब आपको एक सर्किट दिया है, उस सर्किट में आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। लाइक दे में आस्क की फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, find the current through this element। so this is analysis। okay, एक सर्किट ऑलरेडी गिवन है एंड यू आर फाइंडिंग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सर्किट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस में आपको प्रॉपर्टीज दिया जाता है, लाइक आपको आउटपुट किया चाहिए या फिर व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये आपको बताया जाता है एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द सर्किट अकॉर्डिंगली। सो सिंथेसिस का हमें यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सिंथेसिस हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट सिंथेसिस। सो व्हाट इज नोड एंड जंक्शन? So the difference between node and junction is where two points meet each other, two branches meet each other. Like this branch is branch 1, this is branch 2. So this is said to be a node. Okay. And now what is junction? When more than two branches meet together at a point, that point is said to be junction. Like if these three branches are meeting at a point, so this is called as junction. Okay. I hope I'm clear to everyone. I hope you people are not getting bored. Shall we continue? Any difficulty till now? Okay, fine.
please keep responding in the chat box. That keeps me going. Okay. So the next one is loop and mesh. So we are going to study deep about loop and mesh. So I'm skipping it for now. So what is unilateral and bilateral element? So unilateral element, as its name suggests, it can be used in only one direction. Bilateral element can be used in both the directions. If you take the example of resistor, so let us suppose you have to connect one resistor in the circuit. So you don't check the polarity of resistor, like where is positive and where is negative. You directly connect the resistor in the circuit. Like it works in a both way. मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में उसको कनेक्ट करोगे तो वो सिमिलरली वर्क करेगा, right? So resistor is a bilateral element. Its VI characteristic do not change even if we change the polarities across its terminals, वोल्टेज पोलरिटीज। ओके, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव कनेक्ट कर दो, कोई डिफरेंस नहीं है, इट विल वर्क सेम। यूनिलैटरल एलिमेंट्स आर विच, लाइक उनको एक पर्टिकुलर वे में हमें उन्हें कनेक्ट करना पड़ता है। लाइक इफ यू वांट टू फॉरवर्ड बायस द डायोड, यू हैव टू कनेक्ट द पी टर्मिनल टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड टर्मिनल टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी। If you reverse the polarities, then it will be reverse biased, so it works in a certain direction. So that is unilateral. Diode is unilateral, and resistor is bilateral element. Next type of elements is active and passive elements. So अगर हम इसको मतलब थोड़ा सा मोटा मोटी सीखने की कोशिश करें, so active elements are those which require external power supply for their functioning. This is very general information, very general definition. Passive elements को जरूरत नहीं होती एक्सटर्नल पावर सप्लाई की। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिटेल इसका डेफिनेशन सीखें, सो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज which deliver energy, or the elements which control the flow of charge particles or electrons. So these are active elements, and passive elements do not interfere with the uh, what we can say charge particles. They do not deliver power, they absorb the power, they dissipate the power. So these are passive elements. So active elements are op amp, BJT. So if you remember the diagram of op amp, you must be having positive and negative. So you have to actually apply the power supply here, right? So that is active element. This is general definition. And passive elements are resistor, capacitor, and inductor. They do not require any external power supply for their functioning. Okay. So we are going to deal with passive elements only in networks subject. एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो हम ईडीसी में सीखेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उनका यूज है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उनका यूज है, लेकिन नेटवर्क्स में we just have to deal with passive elements only. So this is resistor. Now we all are engineers and I'm sure कि आप में से कोई भी नहीं होगा जिसने resistor देखा नहीं है या फिर उसका symbol देखा नहीं है. Okay, so this is resistor and its symbol. Next we have capacitors. These are the different types of capacitors and these are the symbols. मैं ज्यादा इसके बारे में थ्योरी आपको नहीं बता रहा हूं बिकॉज हमें थ्योरी नहीं लिखना है एग्जाम में. वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, सो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द प्रॉब्लम्स रेदर देन द थ्योरी. ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि रेजिस्टर के जो कुछ प्रॉपर्टीज है या फिर डेफिनेशन है वो आपको पता ही होगा. रेजिस्टर इज अ डिवाइस which opposes the flow of electrons or the flow of current, right? So these are capacitors. जो पहला सिंबल है फिक्स कैपेसिटर का, वही हम यूज करेंगे नेटवर्क सब्जेक्ट में. देन वी हैव इंडक्टर्स. सो दिस इतने सारे टाइप्स के इंडक्टर्स अवेलेबल हैं. आप में से आई डोंट नो आपने कितने एलिमेंट इंडक्टर्स इसमें से देखे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट इंडक्टर, दैट इज एयर कोर इंडक्टर, विच वी आर गोइंग टू यूज इन द नेटवर्क सब्जेक्ट, एटलीस्ट दिस सिंबल. ओके, so next we have voltage and current sources, right? So for AC voltage sources we have this symbol of sine wave. For DC voltage sources we have polarity, that is positive and negative, right? So this is the symbol of AC voltage source and DC voltage source. This is the symbol of current source. So there are other sources as well. अगर आप में से किसी ने नेटवर्क के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए सो आपने उसमें देखा होगा कि डिपेंडेंट सोर्स नाम का एक सोर्स रहता है. दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट. ओके, सो ये जो सारे सोर्सेस है ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेज जो है उनका सिंबल थोड़ा सा अलग रहता है. लाइक इफ यू वांट टू ड्रॉ द डिपेंडेंट सोर्स, सो इट्स सिंबल विल बी समवॉट लाइक दिस.
like, and this dependent voltage source, its value will depend on other elements from the circuit. It may be a resistor, it may be a current source, it may be anything, but its value is dependent on some other source or some other element. But in case of independent elements, their value does not depend on any other element than themselves. ठीक है, मतलब अगर आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है तो उसका उसकी जो वैल्यू है वो 5 वोल्ट वोल्ट ही रहेगी। डजेंट मैटर आप कितने भी चेंजेस करो सर्किट में। लेकिन अगर आप सर्किट में चेंजेस करते हो, सो डिपेंडेंट सोर्सेज की जो वैल्यू है दैट मे चेंज अकॉर्डिंगली, राइट। सो डिपेंडेंट सोर्स नाम का कोई भी कंसेप्ट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ। ठीक है, हम थियोरेटिकल मतलब थ्योरी पढ़ने में डिपेंडेंट सोर्सेस हम यूज करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे सोर्सेस नहीं देखे जाते हैं। इवन रियल लाइफ में करंट सोर्स भी आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। अगर किसी ने देखा है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि यस आई हैव सीन द करंट सोर्स। किसी ने देखा है करंट सोर्स? व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स? आई जस्ट स्पेसिफाइड, इजंट इट? हैव एनीवन सीन करंट सोर्स इन रियल लाइफ? वोल्टेज सोर्सेस सबने देखा है। बैटरी, बैटरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वोल्टेज सोर्स। एनीवन देखा नहीं है तो नो लिख दो चैट बॉक्स में। दिस इज ऑल्सो आंसर, इजंट इट? नॉट सीन, ओके गुड। सो एक्चुअल में जो करंट सोर्स है वो भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ करंट सोर्स विद द हेल्प ऑफ जेएफईटी। अगर आप जेएफईटी डिवाइस को अगर एक्सप्लेन करना चाहोगे, सो जेएफईटी इज अ voltage controlled current device, right? With the help of voltage we control current in the JFET. So a current source can be fabricated, but it is not available independently like our battery, isn't it? मे बी मतलब कुछ हायर एप्लीकेशंस के लिए करंट सोर्सेस अवेलेबल होंगे, लेकिन जनरल एप्लीकेशंस के लिए करंट सोर्सेस अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। So this is very basic law, Ohm's law, V is equals to IR. I don't need to elaborate more about this. Then we have basics of like the network KVL and KCL, Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. So now we are going to learn node and mesh analysis. This is the first point from our network analysis subject. So if you can see the syllabus here, node and mesh analysis, right? So we are going to learn that. सो इसमें सबसे पहले हमें केवीएल और केसीएल एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये 3 लॉस क्लियर है, सो जो मैंने नीचे क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो इसमें आपका एप्टीट्यूड चेक होगा। नाउ व्हाट इज केवीएल? केवीएल इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ लूप इज इक्वल टू 0। मतलब अगर एक लूप है, ओके, एंड उस लूप में कुछ एलिमेंट्स है, लाइक let us suppose, let me just draw one circuit. Okay, so this is one resistor, this is a voltage source, okay, and this is again a voltage source. Let us suppose this is V2, this is V1, and this is R. So sum of the voltages in a loop is equals to 0. ये loop है, इस loop में जितने भी voltages रहेंगे उनकी sum क्या रहेगी? 0 रहेगी. So first of all, we have to find out voltage across this resistor R. That is our first what we can say first step. So इसके across हमें voltage मिल गया. So V1 तो already voltage के form में ही है, V2 है, and we have got the voltage across R. We can apply KVL here. Okay, so this is the KVL. Now what is KCL? KCL is, it states that the sum of all currents entering a node is equal to the sum of all currents leaving the node. Let us suppose there is one node, I name it as A, and one branch is there, and 5 ampere current is coming at this node, and 2 branches are going out of this node. So sum of these two, like if it is 2 ampere, it has to be 3 ampere. Okay, sum of all the currents entering a node is equal to the sum of all currents leaving the node. So ये हुआ हमारा KCL. I hope KVL and KCL are clear to you.
Okay, shall we move further? Please use chat box. Okay, thank you. चलो ठीक है. Now, very interesting question. I'm not expecting a correct answer from you, but I just want you to take the feel how gate exam tricks you. मतलब किस तरह से वो आपको ट्रिक करते हैं. So just observe the circuit and find the current through this 10 ohm resistance. Find the current through this 10 ohm resistor. You have these options. I You just predict the options. आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. Okay. What is your answer? Everyone, I need an answer from everyone. What can be the answer? Okay, one answer I have got 9 ampere. 0 ampere. Okay, Srestha, fine. 0 ampere. 2 ampere. Quick, quick, please quick. You just have to type one digit only, isn't it? सिर्फ 3 ही आंसर आपको प्रिडिक्ट करना है, कैलकुलेट नहीं करना है. ओके फाइन, 3 ही लोगों ने आंसर दिया, नो इश्यूज. सो now we will actually calculate what is the current through 10 ohm resistance. ओके सो एक आंसर मिला है 9, दूसरा आंसर मिला है 0 एम्पियर, तीसरा आंसर मिला है 2 एम्पियर, मतलब 3 आंसर्स. सो लेट अस सपोज the current through this 10 ohm resistance is I. Okay, I is the current through this 10 ohm resistance. Now what will be the current through this 5 ohm resistance? 4 minus I, isn't it? 4 एम्पियर यहां से आ रहा है, I यहां पे चला गया, so 4 minus I will be here, right? Now here it will be 5 ampere, I is coming from here. So in this resistance, we will be having 5 plus I. बराबर, यहां तक क्लियर है? ओके सब लोग 0 0 बोल रहे हैं. ओके ओके फाइन, गुड, ठीक है. सो अभी हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है. इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है. जहां से करंट एंटर करता है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, जहां से करंट जो है बाहर निकलता है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, एंड करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज वोल्टेज V इज इक्वल्स टू IR. तो यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा? 10I रहेगा, बराबर ना. I करंट जा रहा है 10 ओम रेजिस्टेंस से. Now voltage across this 5 ohm resistance, so it will be 5 into 4 minus I. 5 into 4 minus I. 4 minus I current जा रहा है and this is resistance. Now voltage across this 4 ohm resistance will be 4 into 5 plus I. Clear till this? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके अभी भी आंसर्स चेंज हो रहे हैं, लाइक 1 एम्पियर. ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है ठीक है, गुड. सो अभी हमने यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई किया? केसीएल अप्लाई किया, कि मतलब यहाँ पे I भी आ रहा था, 5 भी आ रहा था, तो जो ब्रांच लीव कर रही है इस नोड को उसका करंट रहेगा 5 प्लस I. सो अभी अप्लाई केवीएल हियर इन दिस लूप. ये जो लूप है ना, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करो. कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम? सो अगेन सी पोलैरिटीज, पोलैरिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जहां से करंट एंटर किया दैट इज पॉजिटिव, जहां से करंट एग्जिट कर रहा है दैट इज नेगेटिव. अगेन हियर आल्सो इट इज पॉजिटिव नेगेटिव. सो algebraic sum of all the voltages we have to do that, right? So I will write I will start from here. Okay, so minus 5 into 4 minus I will write it here, minus 5 into 4 minus I. Now let's come forward, plus 10I, plus 10I, and plus 4 into 5I, right? 4 into 5I is equals to 0. तो मैंने सारे वोल्टेजेस यहाँ पे ले लिया और इनका जो सम है वो मैंने 0 कर दिया, राइट? वी विल सॉल्व दिस नाउ. minus 5 into 4 is minus 20, minus 5 into minus I is plus 5I, plus 10I, plus 4 into 5 is plus 20, 4 into I is plus 4I is equals to 0. So this positive 20, negative 20 gets cancelled, and we have 5I plus 10I plus 4I, that is 19I is equals to 0. I is equals to 0 by 19 or equal to 0.
राइट. सो आई इज इक्वल्स टू व्हाट, आई इज इक्वल्स टू 0. सो कई सारे लोगों ने आंसर जो है वो 0 दिया है, राइट. लेकिन बहुत सारे लोगों ने जीरो के अलावा आंसर दिया है. मतलब अगर आप इस सर्किट को देखोगे तो आपको लगेगा कि दो दो करंट सोर्सेस यहाँ पे लगे हुए हैं. सो जीरो आंसर कैसे हो सकता है? सो यू हैव टू कीप इन वन थिंग इन माइंड कि आप अगर तुक्का मार रहे हो सो वो गलत ही आएगा. ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड इन दैट वे. यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन कम टू अ कंक्लूजन. ठीक है, तो इसी की वजह से कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गेट एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाते हैं. ऑलराइट, फाइन. ठीक है. तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं. सो इन दिस एग्जांपल यू हैव टू अप्लाई द केवीएल. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. राइट. सो केवीएल अप्लाई करो और ई की वैल्यू फाइंड आउट करो जल्दी. 2 मिनट के अंदर मुझे आंसर चाहिए. व्हाट इज ई इज इक्वल्स टू? केवीएल अप्लाई करना है यहाँ पे. कर लिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द आंसर? नो वन. -4. ओके. रमन कुमार हैज गिवन द आंसर -4. 16. ओके, इंटरेस्टिंग. ठीक है. तो चलो अभी मतलब या -16. ओके. नो, रमन कुमार हैज चेंज्ड हिज आंसर. फाइन. व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज गिव आंसर्स. समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? प्लीज बी इन्वॉल्व. ओके, फाइन. सो -16 is the correct answer. How we will calculate that also? Very simple. See, this is 0 volt. 0 volt can be considered as a ground. Okay. And here we have 10 वोल्ट. सो 10 वोल्ट का यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ग्राउंड होगा ना. मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट का एक बैटरी लगा होगा, तभी जाके यहाँ पे 10 वोल्ट पोटेंशियल आ रहा है ना. सो यहाँ पे ग्राउंड होगा. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वर्चुअल ग्राउंड कंसिडर करना है. राइट. सो यह एक लूप बन जाएगा. इट विल बी अ लूप. राइट. सो ये लूप मैंने उल्टा लिख दिया. ठीक है, मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ. सो सी, आई स्टार्ट फ्रॉम प्लस आई हैव 10 is equals to क्या रहेगा? 0 रहेगा according to KVL. Sum of all voltages in a loop is equals to 0. So what it is? E plus 16 is equals to 0. E is equals to -16. Okay. Okay, fine. ठीक है, 16 वोल्ट. ओके, कई सारे लोगों ने दिया आंसर. वेरी गुड. नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन. वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन. प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. Please try to solve it. Apply KVL only. You will get the answer. You have to find out the value of current I. Everyone, please try to solve. Option A. Okay, Raman Kumar. Fine. 1.875. Shrishti, please recheck your answer. Okay, option A. Option A. Okay, fine. Option A is the correct option. This is very easy question, right? आपको सिर्फ KVL अप्लाई करना है. आपको तो पता ही है. लाइक देखिए, यहाँ से यहाँ पे 2i रहेगा, यहाँ पे 2i रहेगा, यहाँ पे 2i, and here also it is 2i. So 2i plus 2i plus 2i plus 2i, that is 8i, isn't it? अभी ये -5 वोल्ट है. So -5 वोल्ट will get cancelled with +5 वोल्ट, right? Now यहाँ से हमने शुरू किया है ना, so it will be +25. So मैं यहाँ पे +25 लिखता हूँ. And when we come like across this loop here, we have -15. So it will be equal to 0. So 8i is equals to 8i is equal 8i plus 10 is equals to 0. So 8i is equals to -10, and I will be equal to
minus 10 by 8, that is this one. So this is the correct option. राइट नाउ जो मैं डिस्कस कर रहा था ना कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस, सो दिस इज द इंडिपेंडेंट सोर्स दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस सर्किट. ओके, सो इसकी जो वैल्यू है 2 VB, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी द करंट थ्रू दिस 3 ओम रेजिस्टेंस. मतलब यहाँ पे अगर करंट चेंज होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी चेंज होगा, एंड अकॉर्डिंगली इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी. सो what we have to find out here, the current in the given circuit with a dependent voltage source. तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है. हाउ वी कैन फाइंड आउट? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, minus 24 minus start from here, minus 24 plus, let us suppose we will give the current the name I. Okay, the current I is flowing, so it will be plus I, 1 into I is I, minus 2 VB, symbol minus 2 VB plus VB or 3I. We can write 3 VB also or 3I also, plus 4I is equals to 0. Now this VB can be written as 3I. So minus 24, this I plus this 3I plus this 4I, that is 8I minus 2 VB. So minus 2 VB को मैं लिखूंगा 3I is equals to 0. So minus 24 plus 8I minus 6I is equals to 0. So 2I is equals to 24. 8I minus 6I is 2I, and 24 goes to the right side. So I will be equal to 12 ampere. ठीक है, 12 ampere. How is it 25 minus 15? Where? In this example, see 25 यहाँ पे positive है, we are starting from positive, and when we go through this loop we have negative sign. यहाँ पे नेगेटिव से शुरू हो रहा है, राइट ना? हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, सो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अकॉर्डिंगली जो साइंस हम आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे. सो प्लस 25 लिखा मैंने और नेगेटिव 15 लिखा. So 12 ampere is the current flowing through this circuit. All right. Now I have last question, that is this one. Please take screenshot of this question. Okay, please take screenshot of this question. Try to solve the question, and you can post your answers on the group till morning. Okay, in the morning, mostly till 10 a.m. or 12 a.m. we will dissolve the group. Before that, you can post your answer. Okay, have everyone taken the screenshot? सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? Taken screenshot? Please try to solve the question. And this question is being asked in the GATE exam 2021. लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था. आई होप आप लोगों ने अगर दिया है तो आपने देखा होगा, अगर नहीं दिया एग्जामिनेशन तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, आई एम कंसिडरिंग दैट सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है. So thank you so much for attending this question, and if you have any doubts you can reach out to me on this number. So there are certain doubts asked by some of you people. So these are the doubts, right? Only online classes will be provided or any recorded classes. So as you can see, the classes are being recorded, so you will get the recording of the classes also. We upload the recording on YouTube, and you can watch the recorded classes over there. Okay, and if I talk about syllabus, sir has already clarified that. Okay, so I hope you enjoyed the lecture, and that's it from me. Thank you. I would like to hand over to Santosh sir. Thank you, sir. Hello, good evening. I'm audible. Just put in chat box for my information. Okay. See, nothing much to say. Shankar sir has already told you about syllabus, marking system, about exam, and so many other things. Now, what we expect is sincerity from your end, so that next 100 hours you attend best possible way. The people, those who don't pay anything, don't have any liabilities, don't feel like it's their own, so they don't go with a sincerity and dedication, which we expect
and that is why we are putting that 500 rupees fees, which you can pay before next class. Schedules and all other things will be posted on this particular group from which you emerged to be, got connected to this particular meeting. But very importantly, that you will not be allowed to attend next class unless until you pay that rupees 500 and it goes to Shankar sir directly. So आपको उनसे ही इस सब चीज के बारे में कनेक्टेड रहना है, बट डोंट अननेसरली कीप ट्रबलिंग हिम, क्योंकि काम से मतलब रखना अभी ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में ज्यादा अच्छा होता है. सो दिस इज ऑनलाइन टीचिंग, मोस्ट ऑफ डाउट्स आर क्लियर्ड बाय हिम. मेरी तरफ से भी मैंने जितना हो सके उतने जवाब दिए हैं. तो नाउ या 500 इज द टोटल वैल्यू टू मेंटेन योर सिंसियरिटी, कि भाई हमने कुछ पैसे दिए हैं तो हमको सिंसियरली ये करना है. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर वगैरह अभी आप ग्रुप पे ही डाल दीजिए, सर ओपन कर देंगे ग्रुप सुबह में. और मैं तभी कहाँ पे पेमेंट करना है ये अभी डाल देता हूँ. आपको डेमो क्लास भी अपलोड किया जाएगा, वहां पे एक तकरीबन 100 प्लस पार्टिसिपेंट्स है. तो या कुछ सवाल आ रहे हैं तो मैं जवाब ही दे देता हूँ पढ़ के. प्लीज शेयर दैट प्रेजेंटेशन. ये प्रेजेंटेशन शेयर करिए सर, यूट्यूब वीडियो भी भेजिए सर, 100% सिलेबस भी 2 बार कवर करिए. 500 रुपीज देते हैं क्या हम लोग, देखते हैं अभी कौन है ये मक्का वेनू RGU KT. ओके, ये यहाँ एक्सपेक्टेशन इतने हैं कि आप बोलेंगे सर चांद को भी लाके दे दो. ओके, ओनली शंकर सर विल बी टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स मोस्टली लॉ प्रकाश सर लेंगे, एप्टीट्यूड शंकर सर लेंगे, कुछ हिस्से जो आपके सिलेबस के हैं वो शायद कोई और प्रोफेशनल्स लेंगे. बट देन वी हैव सेड इट वेरी क्लियरली, syllabus covered will be approximately 70-75%. एंड जो आवर्स भी बोले गए कि 100 आवर्स होगा, हो सकता है कि वो 80-75 आवर्स पे आ जाए. ओके, बाहर फीस 20,000 से 50,000 के बीच में है, ये आप भूलिए मत. ओके, व्हेन विल द क्लासेस स्टार्ट? पहले 10 बच्चे जब 500 रुपया देंगे तो क्लास शुरू हो जाएगा, ताकि 10 बच्चों के साथ कुछ 2 लोग नहीं आए तो 8 बच्चों को पढ़ाना और नहीं लगता है. एक बच्चे को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना थोड़ा और लगता है. श्रेष्ठा जी, ओके. यस सर, कैन यू टेल अस अबाउट द टाइमिंग? टाइमिंग्स नॉर्मली हम वो रखेंगे जो आपको सुटेबल है. लॉकडाउन में हम सब फ्री है, बट जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आपके कॉलेजेस चालू हो जाएंगे, देन यू आर द प्रायोरिटी नंबर 1. आप सबको तकलीफ न हो इसलिए रात में 9 बजे का क्लास रहेगा या सैटरडे संडे में आपके हिसाब से रहेगा. दैट इज वाई 100 आवर्स आर डिफाइंड, विच वी से कि मिनिमम लिमिट में कम अप टू 75. तो ये 75 आवर्स कंप्लीट करने के लिए हमको 6 महीने में कम से कम हमको 2 या 3 लेक्चर लेने पड़े. ओके, तो आज के लिए इतना अच्छा है. 10 बजे की तो क्लास होगी नहीं, 9 बजे की होगी, क्योंकि 10 बजे नॉर्मली वी शुड क्लोज डाउन डे. तो ये सारी चीजें आपकी आंसर की जाएंगी. अभी मैंने जितना दिया उसके हिसाब से फिर से एक बार, ये 500 रुपीज टोटल फीस है, तो वो आपको पे करना है. मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे वो डाल देता हूँ जानकारी, एंड देन यू कैन पे एंड इंटरेक्ट विद शंकर सर डायरेक्टली. फिर हम इमीडिएटली आपका नेक्स्ट क्लास अरेंज करेंगे. तो क्या हम गुड नाइट बोले एक दूसरे को? शैल वी लीव द क्लास? बोलने के लिए भी नहीं कोई बचा लगता है. ओके, चलिए रमन कुमार जी, गुड नाइट. ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास. थैंक यू सो मच, बाय बाय. Please leave the class so that recording stops automatically. Okay, thank you so much. Please leave. चलिए अथर्वा जी, श्रेष्ठा जी, शंकर सर, चलिए आप भी लीव कर सकते हैं इन केस.